हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू ओसीएस बाय रंजन यूट्यूब चैनल। आज आम सीपीटी 2021 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवा पॉलिटिकल साइंस ता पूर्व समस्त को कही रखुची जे सीपीटी रो टेस्ट सीरीज भी आम स्टार्ट हो सारी ओसीएस बाय रंजन ऐप रे। निश्चित भाव में ओसीएस बाय रंजन ऐप टी को डाउनलोड करी जॉइन होइजिबे। फॉर फर्दर इनफॉरमेशन ऐप रे चैट सेक्शन अच्छी, चैट सेक्शन को जाई सार सहित कथा हो जातु। तो चलते स्टार्ट करवा। कॉमन पीजे एंट्रेंस टेस्ट 2021 जहाँकि फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी whose statement is this: whenever you are or want to be, you may not be interested in politics but politics is interested in you। यही स्टेटमेंट कहवाक चाहूँगी जे तुम जो भी थाओ, जो जावाक चाहू था, यू तुम मैंने इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स रे इंटरेस्टेड थाओ कि न थाओ, बट पॉलिटिक्स सब बेले तुम उपर इंटरेस्टेड थाए। सब जगार पॉलिटिक्स अच्छी। यही क्वेश्चन देखा मात्रे ही आपण मानकर बाउंस हो जापे। तो से चिंता करंतु नहीं, आग को बहुत इजी क्वेश्चन सब अच्छी। तो यही क्वेश्चन सब मन रखा क्वेश्चन गुड़ाक अटे। तो आपण थे मन रखी दिंतु कि यह मार्शल हावर्ड ब्रांचमैन कही। ऑप्शन नंबर 1 से गोटे मार्क्सिस्ट एवं ह्यूमनिस्ट राइटर थिले। Question number 2. In whose opinion the process of allocation of scarce resources is called politics? He used the word who gets what, when and how. Politics who gets what, when and how यह लास्वेल कर थिंकिंग थिला। तांकर बुक पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट, व्हेन एंड हाउ, तांकर बुक रे से ए थिंकिंग देथिले। तो एटा हबो ऑप्शन बी लास्वेल। Question number 3. Whenever state exists, there is politics, but the converse of is not true that whenever politics exists, so does state. Whose description is this? यह सब क्वेश्चन सब मन रखा क्वेश्चन माने अटे। तो थरे भलरे मन रखी दिंतु। यह आम लिप्सन कही, यही स्टेटमेंट लिप्सन कही। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 4. The Government Act 1919 is also known as Montagu-Chelmsford Reform। The Government of India Act 1919 को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मध्य कह जाए, जहाँ थ्रू रे कि आम डायरकी प्रोविंसेस रे लागू होइथिला। यह सब मन रखी दिंतु। थरे थरे मन रखीदे बहुत इजी हेबो आपण माननकु। क्वेश्चन नंबर 5. हु इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिसेंबर 13, 1947? इथिरे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आम जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करथिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। क्वेश्चन नंबर 6. हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर थिले लॉर्ड रिपन। यह सब मन रखा क्वेश्चन थरे थरे मन रखीदेवे। क्वेश्चन नंबर 7. Whose entitlement theory of justice opposed the redistribution of resources by the state for any purpose? यह रोबर्ट नोजिंग कर एंटाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस देथिले। से अपोज करुथिले स्टेट रो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस को। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 8. हु सेड injustice arise when equals are treated unequally? equals are treated unequally आम अरिस्टोटल कर कॉन्सेप्ट थिला। अरिस्टोटल देथिले प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी रो प्रिंसिपल देथिले। से कहिथिले इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली, इक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, एवं जस्टिस सब बेले प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी उपरे बेस्ट हेबा कथा से कहिथिले। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 9. The classification of human action as self-regarding and other-regarding action was made by self-regarding and other-regarding action। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करी लिबर्टी ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करने से जे.एस. मिल ही देथिले। तो यार करेक्ट आंसर होची ये जो सिलेक्ट बिलो करेक्ट आंसर होची, यार ओनली 4 इज करेक्ट। तो यहाँ जे.एस. मिल करो concept self regarding action and other regarding action।
Question number 10. If a party wins 2% of state in the Lok Sabha from at least 3 different states is recognized as national party. ए क्वेश्चन टे नेशनल पार्टी रो डेफिनेशन है तो इटा नेशनल पार्टी ही है वो ऑप्शन ए. Question number 11. In which year the Parliament passed the 52nd Amendment Act for checking the practice of political defection? ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ. ଏହାକୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣିଥିଲେ 1985ରେ ଏବଂ ଏଥିରେ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ. ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ହିଅର୍ 1985. Question number 12. In 1938, when the Union government tried to establish Hindi as national language, anti-Hindi movement was started in Tamil Nadu under their leadership of. तो यार ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी प्रेयर ई भी रामास्वामी. से समय से जस्टिस पार्टी लीडर थिले एवं जस्टिस पार्टी आंटी हिंदी मूवमेंट स्टार्ट करी. तो ऑप्शन सी इज राइट हियर. Question number 13. Who point out the two important trends in caste in India? First, the process of Sanskritization and B, Westernization. यहाँ एम.एन. श्रीनिवास ଦେଇଥିଲେ. ऑप्शन नंबर डी एम.एस. श्रीनिवास ଦେଇଥିଲେ. ତାଙ୍କର ବୁକ୍ କହିପାରୁ ଆର୍ଟିକଲ କହିପାରୁ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे से 1962 से एक कथा कही. तो ऑप्शन डी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 14. इन 1989 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन of Mandal Commission for Reservation of Job for OBCs and OBCs in Public Sector. यहाँ हम VP सिंह कही V प्रताप सिंह. ऑप्शन बी इज राइट हियर. Question number 15. Which branch of political science compares the features, advantages, disadvantages, merit, demerits, similarities and dissimilarities in political institution in order to determine the best in political institution? तो यह comparative गवर्नमेंट रो डेफिनेशन अटे. तो ऑप्शन डी इज राइट हियर comparative government. Question number 16. Which approach is concerned with the study of the formal political structure like legislature, executive and judiciary? यह एक्चुअली डेफिनेशन अटे आम ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रो. तो ये तो ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं. तो ऑप्शन ए इज राइट हियर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. Question number 17. Whose political communication approach lays emphasis on that part of the system affects another by sending message or transmitting information? ऑप्शन नंबर बी यह कार्ल ड्यूस्ट्रज थिंकिंग अटे. से नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लिखी जो आम कम्युनिकेशन थ्योरी फीडबैक थ्योरी को यूज करी. तो ऑप्शन बी इज राइट हियर. Number 18. Who is an advocate of structural functional approach? Structural functional approach रो advocate आम Gabriel Almond थिले. Question number 19. Who is generally regarded as the father of scientific management theory in public administration? Father of scientific management theory in public administration होचंती F.W. Taylor. Option B is right here. Question number 20. Who wrote the book Toward a New Public Administration? The Minobrook Perspective. यह आम फ्रैंक मरिनिंग बुक थिला. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर. Question number 21. Which theory of in international relation is advocated by E.H. Carr, George Kennan, Reinhold Holt and Morgenthau? तो ये सब आम क्लासिकल रियलिज्म रो सपोर्टर थिले. यह गोटे ट्रिक रु मध्य आपण माने क्वेश्चन टाको सॉल्व करि परिबे. मॉर्गेनथाउ आम क्लासिकल रियलिज्म रो फादर अटंती. तो तांकर सहित जे भी जोड़ी हेबे से मध्य आम रियलिज्म रो सपोर्टर हेबे. तो ऑप्शन सी इज राइट हियर क्लासिकल रियलिज्म.
Question number 22. Politics is governed by objective laws which have roots in human nature. Dex principle of Hans J. Morgenthau रियलिज्म थ्योरी तो मर्गेंथाउ आम 6 प्रिंसिपल देथिले आपण माने समस्ते जानिथिबे तार फर्स्ट प्रिंसिपलटा एहा politics is governed by objective laws which has roots in human nature. The option B is right here. Question number 23. Neo-realist theory was pronounced by in his book Theory of International Politics in 1979 रे केनेथ वास्कर बुक रे लिखा प्रोनाउंस होता Theory of International Politics. The option D is right here, Kenneth Walsh. Question number 24. The concept of political dex is that it is set of attitudes, belief and orientation of the people towards the political system. यह आमर political culture definition अटे एटा आम एलमंड देथिले तो ऑप्शन A is right here, culture, political culture. Question number 25. Which approach takes into account the norm and informal practices that shape the functioning and evolution of institution in various way? तो यह आम न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म रो डेफिनेशन अटे तो ऑप्शन बी इज राइट हियर. Question number 26. The voting method is one in which the voters indicate on a ballot the candidate of their choice and candidate who receives that most voters win, known as first past the post system. यह हम इंडिया रे मध्य देखिबाकू मिली थाए. Question number 27. Who defined policy as the output of the political system and public policy as the authoritative allocation of values for the whole society? यह आम डेविड ईस्टन कर डिफाइन करथिले यह पॉलिसी तो ऑप्शन ए इज राइट हियर. Question number 28. Who famously said public policy is whatever a government choose and to do or even not to do. तो यह आम थॉमस डाई कही यह सब मन रखा क्वेश्चन गुड़ा अटे तो आपण मैंने निश्चित भाव में मन रखिदेवे. Question number 29. Which public theory renders goods and services and also distribute their cost among these member? Render माने होची प्रोवाइड तो यह आमर क्वेश्चन रू ही जना पड़ी जाउची डिस्ट्रीब्यूट देयर कॉस्ट अमंग दिस मेंबर्स तो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी रे ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाए तो ऑप्शन बी इज राइट हियर. Question number 30. What involves technological, economical, political and cultural exchange among the nation? यह मध्य क्वेश्चन रू ही माने जना पड़ी जाउची तो क्वेश्चन को भल से पढ़ आराम से जानी पारिबो. तो यह कहूची टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सचेंज नेशन मानक मध्य की इनवॉल्व करि थाए. तो मॉडर्नाइजेशन तो करिबो नाही, लिबरलाइजेशन मध्य करिबो नाही, प्राइवेटाइजेशन मध्य करिबो नाही, ग्लोबलाइजेशन करि थाए. ग्लोबलाइजेशन हमर टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सचेंज नेशन मानक मध्य करि थाए तो ऑप्शन डी इज राइट हियर. Question number 31. The Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT was concluded on July 1. तो यही क्वेश्चन रे दुईटा ही ऑप्शन ठीक अच्छी तो यह कहूँ concluded on July 1 तो July 1 1968 रे यह को ओपन करा जाइथिला जे स्टेट माने स्टेट जहाँ को साइन करिबार अछि करि पारिबे किंतु conclude हेथिला यह किंतु conclude यार सब साइन conclude हेथिला मार्च 1970 रे तो ऑप्शन डी
B and D is both right here. Question number 32. The idea of Raj Dharma is mentioned in यह गोटे बहुत ही इजी क्वेश्चन शांति पर्व इन महाभारत रे आमर आइडिया ऑफ राज धर्म मेंशन करा जाइथिला तो ऑप्शन ए इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 33. फातवा इज जहानदारी इज ए वर्क ऑफ जियाउद्दीन बोरानी. यह आम माने पूरा बहुत ही इजी क्वेश्चन आम सिलेबस रे ही अछि. Question number 34. Whose foreign policy offers the theory that an immediate neighborhood state is an enemy and neighborhoods separated from oneself by investing enemy as friend. माने एटा बहुत ही माने क्वेश्चन ही जना पड़ी जाउछि. माने यार माने कौटल्य देइथिले या मंडल कौटल्यर मंडल थ्योरी रु यह आसीथिला कि से कहिथिले कि माने आपणकर पड़ोसी देश ही आपणकर सांग. तो यार ऑप्शन ए इज राइट हियर. Question number 35. Rousseau felt that social living corrupted us, leading to such ills as private property and social. Of the following is his famous phrase arising from his reasoning. माने एरा यार ऑप्शन हेबा man was born free but he is everywhere in the chain. माने यार यह कहबाकू चाहूँचे जे आमे जिते बेले जन्म होई थाउ आमे फ्री थाउ माने पूरा फ्री ही थाउ. बट जिते बेले थोड़ा बट जिते बेले टिके बड़ हो जाओ तो आमर कथबार्ता भलरे कथा हो एटा कर सेटा करनी ता सांगरे कथा हो ता सांगरे कथा होनी ता सहित रिलेशन बनाओ ता सहित रिलेशन बनाइले फायदा हेबो. एही सब चेन रे आमे माने जड़ित हो जाओ. सब क्षेत्र रे आमे चेन बोली जड़ित हो जाओ. तो ए मैन वाज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन आम रूसो कहिथिले. So option D is right here. Question number 36. It is better to be human being dissatisfied than a pig. Better be Socrates dissatisfied than fool satisfied. Who said it? माने यह J.S. मिल कहिथिले तांकर यूटिलिटेरियन थ्योरी रे कहिथिले जोथि कि से कहिथिले हमर हैप्पीनेस दुई भाग रे विभक्त होइछि. गोटे हायर प्लेजर और गोटे लोअर प्लेजर. तो हायर प्लेजर को हम मेंटल प्लेजर एवं रियल प्लेजर बोली कहिथिले एवं लोअर प्लेजर माने आमे माने जो न पढ़ी खाई पी मौज मस्ती करी सोई जाऊ ताको लोअर प्लेजर एवं लोअर प्लेजर बोली कहिथिले. तो से माने लोअर प्लेजर को एठी से पीक हिसाब रे कहिसंती. तो इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पीक सैटिस्फाइड बोली कहिथिले. तो क्वेश्चन नंबर 36 रो A is right here. Question number 37. The higher caste Hindu women written by बहुत ही इजी क्वेश्चन. हायर कास्ट हिंदू वुमेन आमर पंडिता रमाबाई लिखी थिले. तो ऑप्शन सी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 38. In which year Swami Vivekananda gave the famous speech in the World's Parliament of Religions in Chicago? से जो कही थिले मोर प्रिय भाई और भौणी माने माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या 1893 रे कही थिले. तो ऑप्शन डी इज राइट हियर. 1893 रे कही थिले मने रखिथिबो. Question number 39. Hindutva is an important work of V.D. सावरकर. V.D. सावरकर आम हिंदुत्व रे बहुत ही इम्पोर्टेंट देथिले. हमर कोर्स रे मध्य अछि. तो ऑप्शन डी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 40. द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर ऑफ स्टेट माने हमर जो स्टेट रो 4 पिलर थाए सेटा को किए एडवोकेट करथिले कहा जाउछि एठी. तो हमर राम मनोहर लोहिया कहिथिले कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर ऑफ स्टेट देथिले से. तो क्वेश्चन 40 रो ए इज राइट हियर.
Question number 41. In which women were granted the right to vote by the US Constitution? एटा होची हमर 1920 रे हेथिला यूएस रे 19th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन रे वोटिंग राइट ग्रांट हेथिला वुमेन माननको पाई. तो ऑप्शन सी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 42. Mary Wollstonecraft's which book was the first text to modern feminism that campaigned for women's right to vote, female suffrage? ऑप्शन डी इज राइट हियर. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन सेटा हमर फर्स्ट टेक्स्ट बुक टू द मॉडर्न फेमिनिज्म थिला जे कि कैंपेन फॉर द वुमेन राइट्स टू वोट एंड फीमेल सफरेज रे कहिथिले तांकर फर्स्ट बुक थिला. Question number 43. Mill with Taylor wrote a book that proposed political right and liberties of women equal to men. तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी इज राइट. द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी दिले. Question number 44. Which book of the Betty Friedman marked that resurgence of liberal feminist thought the 1960s during the second wave of feminism? माने एटा हमर vindication of the rights of women करथिले. ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर. सेकंड वेव रे से करथिले. Question number 44. Which book of Betty Friedman marked that resurgence of liberal feminist thought in 1960s during second wave feminism? Second wave feminism रे हमर vindication of the right of women आस्तिला. तो question number 44 option C is right here. Question number 45. Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill and Taylor Mill were डेक्स फेमिनिस्ट एमाने सब लिबरल फेमिनिस्ट थिले. तो ऑप्शन ए इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच बुक ऑफ साइमन बी बिहेवियर ड्रॉ अटेंशन टू द पर्सनल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल ऑपरेशन? तो से तांकर सेकंड सेक्स बुक्स रे एटा कहिथिले. तो ऑप्शन सी इज राइट हियर. Question number 48. According to Bernstein, the Peggy Merton, in the capitalist system, two type of labor exist. In this are माने से कहते कि कैपिटलिस्ट सिस्टम रे दो टाइप रो लेबर एग्जिस्ट करूथिले. तो सेटा हमर प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव थिला. तो ऑप्शन ए इज राइट हियर. Question number 49. Who was the Kenyan economist and the recipient of Nobel Prize in 2004 set up the Green Belt movement in Kenya in 1977? तो ये आओ कहीं नहांती. ऑप्शन बी Wangari Maathai was right here. तो ऑप्शन बी is right here. Question number 50. The process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented is known as governance. एटा होची हमरो governance रो definition. तो ऑप्शन ए is right here. Question number 50. The process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented is known as. It basically governance रो definition अटे. तो मने रखी दियंतु governance रो definition एटा. The process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented is known as governance. तो ऑप्शन ए इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 51. Who defined governance is the manner in which power is exercised in the management of country's economy and social resources of government. तो इटा बेसिकली ऑप्शन सी इज राइट हियर. वर्ल्ड बैंक. तो 1992 रे गोटे रिपोर्ट आसीथिला डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस. तो सेइथिरे से गुड गवर्नेंस
से आम वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस विषय कही एवं गुड गवर्नेंस डेफिनेशन देते। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। Question number 52. DEX refers to application of information and communication technology for delivering governance services, exchange of information, communication transaction, interrogation of various system। तो यहाँ बेसिकली आम ई गवर्नेंस डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट जो थी कि आम बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करूँ, तापर कम्युनिकेशन आम व्हाट्सएप चैटिंग जो करूँ कम्युनिकेशन करूँ, इंटरोगेशन करूँ वेरियस सिस्टम सहित। तो ये बेसिकली ऑप्शन सी इज राइट हियर, इट इज ए डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। Question number 53. Which commission in 1987 defined sustainable development as development which meets the needs for the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs? तो ये बेसिकली आम बर्लैंड कमिशन कही ऑप्शन सी माने से गोटे बुक लिखी आवर कॉमन फ्यूचर से बेसिस रे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कॉन्सेप्ट आसीथिला। ता 5 वर्ष पर रिओ अर्थ समिट होता, तापर परे एजेंडा 21 बनीथिला, UNSS बनीथिला। तो ये बेसिकली ऑप्शन सी इज राइट हियर। Question number 54. The measure of life expectancy, literacy, education and standard of living for countries worldwide is known as, it basically human development index रो definition। तार एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो 3टी कंपोनेंट अच्छी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये बेसिकली हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन माने दयाकोरी मने रखिदेवे, यहाँ बहुत ही माने पड़ी था एग्जाम रे। Question number 55. Which committees recommended for the introduction of Panchayat Raj system in the India? तो पंचायती राज सिस्टम जो अच्छी आमर एक्चुअली ये दुईटा ही ऑप्शन ठीक अच्छे, अशोक मेहता कमिटी एवं बलवंत राय मेहता कमिटी। एक्चुअली बलवंत राय मेहता कमिटी एक्चुअली दुही ही आम पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले, ता रिकमेंड करथिले हमर इंडिया रे। बेसिकली एथि जदि आमे देखिबा अशोक मेहता कमिटी 1977 रे आसीथिला एवं बलवंत मेहता कमिटी 1957 रे आसीथिला। तो हु इंट्रोड्यूस जदि प्रथम थर पर इंट्रोड्यूस करिछि तो ऑप्शन सी एठी माने बेसी ठीक बसुछि। तो ऑप्शन आम कहीपर ऑप्शन सी इज राइट हियर। मन रखिब अशोक मेहता कमिटी 1977 रे आसीथिला, बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 रे आसीथिला एवं दुहे आम पंचायती राज सिस्टम आम इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले। Question number 56. A document that an organization publish for public reference and which provide details about the nature, working and function of the organization known as, it actually citizen charter definition। citizen charter definition एटा तो definition माने दयाकरी मने रखी देथिबे। Question number 57. The Right to Information Act came into force on 12 October। यह कहूँ राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट केबे आसीथिला 12 अक्टोबर 2005 रे राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट आसीथिला। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। Question number 58. DEX is the management concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operations and interaction with their stakeholders। माने एटा ऑप्शन बी अटे एटार
माने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी माने एक्चुअली कॉर्पोरेट CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी अटे गोटे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अटे जोटा कि कॉर्पोरेट माने दियंती लाइक बड़ बड़ कंपनी माने दियंती तो जहाँकि आम सोसाइटी रे गुड विल बन के रखे माने फॉर एग्जांपल हमर जो कोविड-19 आसीथिला तो गोटे कंपनी आसिला आ कहला कि जो वैक्सीन सब दिया होची गोटे दिन पाई मो आडर फ्री तो सेटा समाज पाई गुडविल है ना तो एटा एक्चुअली ऑप्शन बी इज राइट हियर। Question number 59. Gandhiji wanted a sustainable term to name his new technique of resistance, satyagraha, and gave an advertisement in the following magazine for suggestion. से जो माने मैगजीन टा करी सेटा कौन तो मैगजीन सजेशन करी आमर इंडियन ओपिनियन मैगजीन थिला तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 60. According to Gandhi, Dex is a moral weapon, a passive resistance and a political weapon. माने से कहूँ गांधीजी को मतरे गोटे मोराल वेपन केटा गोटे पासिव रेजिस्टेंस एंड ए पॉलिटिकल वेपन तो यहाँ एक्चुअली बेसिकली सत्याग्रह गोटे माने मोराल वेपन ए पैसिव रेजिस्टेंस एंड ए पॉलिटिकल वेपन तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। Question number 61. In the technique of satyagraha, the term dex implies voluntary exile from one's permanent place of habitation. तो ये एक्चुअली हिजरत ऑप्शन डी इज राइट हियर। हिजरतटा गोटे इस्लाम वर्ड रो आसी थिला तो यार कहबार माने एटा कि जदि गोटे शासक गोटे टायरेनिकल शासक टायरेनिकल माने जानिछ सिंगल रूलर माने लाइक राजा जदि लोक ऊपर से जह दबदबा करिला तो तांकु लोक माने पनिश करि परिबे एवं तार राज्य को से माने छाड़ी चली जाई पारिबे तो एटा ही तार कहबार माने होची तो ऑप्शन डी इज राइट हियर हिजरत। तापर क्वेश्चन नंबर 62 को देखिबा हु स्टार्टेड द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन आइडिया ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह तो एटा हमर मार्टिन लूथर किंग करिथिले हमर अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट करिथिले तो क्वेश्चन नंबर 63 हु गेव द फेमस मैसेज द अर्थ has enough resources for our need but not for our greed to save this earth from the environmental disaster तो एटा एक्चुअली गोटे बहुत ही फेमस माने मैसेज थिला एवं जदि आमे गोटे माने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिबा माने गोटे एटा गोटे कॉमन सेंस रो जदि देखिबा तो एटा सब देखो गांधीजी को ही माने क्वेश्चन सब एटा चलुछि लाइक हिजरत कि आम गांधीजी को सिविल राइट इंस्पायर हेतिला तो सेटा जदि देखिबा बेले एटा गांधी महात्मा गांधी ऑप्शन बी इज राइट हियर तो एटा गोटे महात्मा गांधी को फेमस मैसेज थिला द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेस फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। Question number 64. Hollywood director Dex made a film titled Gandhi in 1982. 1982 रे आमर रिचार्ड गोटे फिल्म बनई गांधी को ऊपर जो थी कि आमर फास्ट ऑस्कार मिली थिला गोटे इंडियन को तो ठीक अच्छे जो इंडियन को मिली थिला ऑस्कार तांको नाटा गूगल रे सर्च करी कमेंट बॉक्स रे लिखिबा देखिबा कि भलरे वीडियोटा को देखुछ एवं एग्जाम पाई सीरियस अछ तापरे देखिबा क्वेश्चन नंबर 65 Question number 65. Gandhiji's The Story of My Experiments with Truth was originally written in Gujarati. Who translate it into English? माने जो तांकर The Story of Experiment with Truth से बुकटा जो लिखिथिले गांधीजी सेटा एक्चुअली गुजराती रु इंग्लिश रे के ट्रांसलेट करिथिला तो हमर ऑप्शन बी महादेव देसाई से ही आमर गुजराती टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करी तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 66.
हु आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रे 5 परमानेंट मेंबर अछंती। तो सेटा किए तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। तो फ्रांस, रूसिया, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना। एक्चुअली यहाँ गोटे कमन सेन्स भी देखी जा। तो 5 परमानेंट मेंबर अच्छा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑप्शन ए रे देख 1 2 3 4 5 6 छटा अच्छी। तो ए ऑप्शन ए ये भूल। ऑप्शन सी रे देख 1 2 3 4 5। तो देख ये तो आमर ब्राजिल नहीं, जर्मनी नहीं, तो नाइजेरिया भी नहीं। तो यहाँ भी आमर ऑप्शन सी कटिगला। तो यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, इंडिया, इंडिया भी परमानेंट मेंबर नहीं। तो डी भी कटिगला। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। फ्रांस, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना आमर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रो परमानेंट मेंबर अटंती। Question number 67. How many official language does the United Nations have? आम यूनाइटेड नेशन रे 60 माने ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी। माने भलरे मन रखी दिंतु अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 68. हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आम 5 परमानेंट मेंबर देखला। एबे नॉन परमानेंट मेंबर आमर 10 टी अछंती यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रे। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 69. Which organ of the UNO functions from the peace place in the Hague, the Netherlands। तो नेदरलैंड रे हमर जो पीस प्लेस हेथिला से तार फंक्शन किए करते से केउ ऑर्गन से तार फंक्शन करथिला। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करथिला। Last question number 70. The United Nations agency concerned the implement of standard of education and strengthening international cooperation in this field is माने ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को रो फुल फॉर्म होची यूनाइटेड नेशन। ई रे एजुकेशनल, एस रे सोशल, सी रे कल्चरल, ओ रे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। तो समस्ते भलरे थांतु, क्वेश्चन प्रैक्टिस करू थांतु, वीडियो देखु थांतु। आ अल्प दिन अच्छी एग्जाम रे तो भल से पाठ पढ़ंतु। जदि वीडियोटा को भल लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। रोचे जय जगन्नाथ।